हैं. We've got tons of questions for the last decade or two once again. And I think if you do this, it's going to be more than enough. इसी YouTube video के अंदर इसका link भी लगा हुआ है. You can download this PDF as well. So let's start off with the first question. Imran is paid $16 per hour. 1 week he works 35 hours. Calculate the amount he is paid for the week. Ji, Hamza, any idea? We will multiply 16 with 35 because he works for 35 hours in a week and he's paid $16 for each hour. Perfect. And the answer is 560. Alright. So I have the marks here open. Let's quickly check that as well. 560. Perfect. Imran is paid 20% extra per hour for working at weekends. Work out the total amount Imran is paid for working 4 hours at the weekend. G. First we'll find 120% of 16 because he's paid 20% extra, which is $19.2. Then we'll multiply it with 4 because he works for 4 hours. Okay, the total amount that he earns is going to be the new value, which is $19.2, and he's working only 4 hours at the weekend. That comes out 76.8. 76.8. 76.8. Good. The exchange rate between pounds and dollars is 1 pound to $1.8. Anna converts to 70 pounds. अच्छा आप जो video देख रहे हो अभी, you would not find many questions on money exchange in my video because this is mostly what students are used to doing, और इस किस्म के questions पे ज़्यादा हमने time waste नहीं किया. तो ये this is only going to be 1 or 2 questions in the entire video. Lead with the solution, Hamza. What are we going to do? We'll use the ratio method. 1:1.8 x ratio 270. ठीक है, तो हमारा पाउंड्स यहाँ पे आ गए और डॉलर्स जो हैं वो यहाँ पे हैं. तो हमारे डॉलर्स जो हैं वो बॉक्स हमें पता है दैट्स 270. वी क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे 4 बॉक्स मेथड भी कहते हैं, जैसे प्रोपोर्शन मेथड भी कहते हैं. यहाँ पे आपने एक्स का है, तो इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस वी गेट 1 pound into $270 is equals to $1.8 into x pounds. ये डॉलर से कट गया और यहाँ पे पाउंड बचा है. पाउंड इज इक्वल टू 270 over 1.8. 1.8. That comes out to be how much? 150. 150. So that's 150 pounds. Yep. Exchange rate का हाँ एक और क्वेश्चन आ गया. Manraj changes 25,200 rupees into dollars. Calculate how many dollars he receives. We'll use ratio method first. Okay. We'll convert it into pounds and then dollars. So what should I lead with? 1:72 is equals to और नीचे x ratio 25:100. ठीक है. बेसिकली हमारे पास हमने ये प्रोपोर्शन यूज़ किया या ये रेशो यूज़ किया कि 1 पाउंड अगर आप लेके जाओ आपको 72 रुपीज़ मिलेंगे. तो आपको कितने पैसे मिलेंगे अगर आप 25,200 लेके जाओ. ठीक है, तो हमारा ये रुपीज़ का कॉलम चल रहा है और ये पाउंड्स का कॉलम चल रहा है. तो लेट मी टू अवॉइड कन्फ्यूजन लेट मी जस्ट टेक अवे द सिम्बल्स फ्रॉम हेयर और इसको हम 4 बॉक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स और ये चौथा बॉक्स. इफ़ यू वर टू मल्टीप्लाई दिस x will go over there and get multiplied with 72 और लेफ्ट पे ये आ जाएगा 1 into 25,200 25,200. Now the 72 goes over there and gets divided. What do we get? 350 exact pounds. Yes. Perfect. I think that's now we'll convert the pounds into dollars. Oh, the question is still left. अच्छा अब 350 पाउंड्स मिले हैं. अब 350 पाउंड्स मिले हैं तो डॉलर्स कितना हुआ. अब हमारी ये कन्वर्जन हमें चाहिए. तो फिर वंस अगेन 4 बॉक्सेस. तो यहाँ पे आ गया पाउंड्स, यहाँ पे आ गया डॉलर्स. 1 पाउंड इज इक्वल टू 2.06. ये मेरे पास कहाँ से वैल्यू आई है, मैंने ये एग्जैक्टली उठा के ऊपर से लिख दिया. और 350 पाउंड्स इज x डॉलर्स. तो वंस अगेन इफ यू मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 350 इंटू बेसिकली x इंटू 1 इज x. 350 और 350 into 2.06 is how much? 721. 721. तो कंफर्म करते चले जाते हैं. 721. All right. Misja changes 380 euros into dollars. He receives $551. How many dollars does he receive for each euro? 1:x
and 380 ratio 551 we cross multiply. परफेक्ट। तो ये आपका जो है, ये जो आपने ऊपर लिखा है 550, दिस इज डॉलर्स एंड दिस इज यूरोस, राइट? ये डॉलर्स का कॉलम है, ये यूरोस का। तो हमारे 4 बॉक्स मेथड है वंस अगेन, एंड इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दीज वी गेट द वैल्यू फॉर, दिस कम्स आउट टू बी 380x 1. इज इक्वल टू 551। जी जी बताओ, x इज इक्वल टू 1.45. 1.45, बेसिकली 551 डिवाइडेड बाय 380। अच्छा, जब वो कह रहे हैं हाउ मेनी डॉलर्स डज ही रिसीव फॉर ईच यूरो, तो हमने किस वैल्यू को किस वैल्यू से बेसिकली डिवाइड करना होता है? ईच यूरो का मतलब है कि वी आर फाइंडिंग इट फॉर 1 यूरो। तो यूनिटरी मेथड के लिए यूनिट, आर यू फेमिलियर विद यूनिटरी मेथड? I used the 4 box method. ओके, चलो, आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स फाइंड दैट दिस वन इजी एज वेल। तो लेट्स स्टिक विद दिस। 551 डिवाइड बाय 380 इज हाउ मच? 1.45. 1.45, 1.45। Now I think we're moving on to simple interest and compound interest form questions. On 31st March, Lydia and Simone दोनों ने 8,000 रुपये अकाउंट में रखा है। Lydia's money in a super saver account. Super saver कौन सा है? ऊपर वाला, उस पर ये रेट मिलता है। Simone's money in an extra saver account. How much money did Lydia have in her account on 31st March 2012? तो कितना टाइम गुजर गया बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक? 1 year. We'll use simple interest formula. I is equals to PRT over 100. ओके, I is equals to 8,000 because it's the principal amount into 3.4 into 1 over 100. तो रेट इज 3.4 एंड टाइम इज 1 ईयर, और पी इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज हाउ मच? 8,000, Yes. एंड दैट कम्स आउट टू बी 272. 272। Then amount is principal plus interest. So we'll add principal amount in interest. परफेक्ट। तो बेसिकली जब उन्होंने कहा ना हाउ मच मनी डिड लिडिया है, वो अमाउंट की बात करें, ये अमाउंट। और अमाउंट वो चीज़ होती है जो फाइनल वैल्यू होती है। 8,000 आपके पास ओरिजिनली था, यू अर्न 272 एक्स्ट्रा ऑन इट, तो यू गॉट 8272 इन योर फाइनल आंसर। इज दैट करेक्ट? Yes, sir. Right. Okay. On 31st March, Lydia transferred this money to an extra saver account. तो लिडिया का बेसिकली क्या सिनेरियो है कि शी वाज यूजिंग दिस सुपर सेवर अकाउंट, फिर उनको गालिबन हाँ एक साल बाद ख्याल आया कि नहीं, लेट मी चेंज दिस टू दिस एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट, एंड वंस शी डिड दैट, हाउ मच मनी डिड शी हैव इन दिस अकाउंट ऑन 31st March 2013? एक और साल बाद, मतलब 2 साल कंप्लीट हो गए, इंटरेस्ट ऐड होने के बाद कितना पैसा बच गया है? तो कैन यू लीड थ्रू द सोल्यूशन with explanation? We'll use the simple interest formula and we'll use the new principal amount which we found in the first part. तो 8272 is going to get used as well. उसके साथ क्या करेंगे? We'll multiply it with the rate. The extra saver rate is 3.5 and it's 1 year, so 8272 into 3.5 into 1 divided by 100. शाबाश। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT over 100, सेम फॉर्मूला, बट आप ये कह रहे हो कि इस बारी प्रिंसिपल जो है वो आपने 8272 यूज़ करना है, ओरिजिनल नहीं यूज़ करना, विच वॉज 8,000, राइट? Yes, sir. और रेट इज 3.5, द टाइम इज हाउ मनी years? 1. एंड डिवाइडेड बाई 100, व्हाट डू वी गेट? 289.52. 289.52। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एक्स्ट्रा, राइट? इसको हम इंटरेस्ट Now भी we'll find the amount. ओके। A is equals to P plus R. Amount is equal to principal, which is the original value, plus interest, which is the extra amount या extra value. Principal कितना था? 8272 Plus 289.5. 289.52 What do we get? 2561.52. What value do I start with? 8561.52. 8561.52. This is the final amount that she has after 2 years. Right. Yes, sir. Right. Perfect. तो बेसिकली अभी तक क्या हुआ है कि लिडिया ने पहले तो 1 साल के लिए पैसे रखाए, सुपर सेवर अकाउंट में रखाए, तो हमने 3.4 का रेट लगाया, वो ये रहा। फिर उसको 1 साल बाद ख्याल आया अच्छा इसमें तो मुझे उतना फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर उसने दूसरे साल क्या किया, हमने उसने एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट में रख दिए।
अब वो जो पहले साल में पैसे बन गए थे वो उसने अब जब दूसरे साल में वापस बैंक में रखाए या जिस जगह पे भी अकाउंट में रखवा रही है, तो उसने देखा कि अब मेरे पास 8,000 तो बन के 8272, अब उसके ऊपर उसने कहा जी मुझे अब नए रेट पे एक्स्ट्रा जो सुपर सेवर अकाउंट जो है एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट उस रेट के ऊपर पैसे दें। तब 8272 पे 3.5% लगा है एंड दिस इज आवर आंसर। वो लिडिया थी। अब सिमोन इज अ सेपरेट गाय या आई थिंक दे रेफरिंग टू अ गाय। सिमोन kept her money, oh okay that's a girl, apologies. Simone kept her money for the 2 years in extra saver account which earned simple interest of 3.5 per year. उसका मुसलसल पैसे एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट में जिस पे 3.5 रेट मिल रहा था। तो इसमें वो कह रहे हैं कि सारा इंटरेस्ट ऐड होने के बाद लिडिया फायदे में रह गया है या सिमोन, किसके पास ज़्यादा पैसे हैं जी? First, we'll find the amount in Simone's account after 2 years using simple interest formula. ओके विच इज I is equals to PRT over 100. ओके। हाउ मच मनी डिड शी कीप? 8,000 Yes, into 3.5 into 2 ओवर 100 over 100. बताओ। 560. तो बेसिकली उनको 2 सालों बाद $560 एक्स्ट्रा मिले। अमाउंट जो Yes, आपने कहा था इस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इनका प्रिंसिपल भी 8,000 था और इनको एक्स्ट्रा मिला 560, तो हाउ मच डिड शी मेक? 8560. 8560। हाउ Now, मच डिड द अदर वन मेक? now we'll subtract them to find the difference. हाँ, 8561.52 minus 8560. तो दिस इज व्हाट द अमाउंट दैट लिडिया मेड, दिस इज द अमाउंट दैट सिमोन मेड। तो उन्होंने पूछा है हु हैड मोर मनी, वी गोइंग टू से Lydia, लिडिया। बाय हाउ मच? 1.52. 1.52। तो आप क्या करोगे? 8561.52 ये जो ऊपर वाली वैल्यू है माइनस जो सिमोन को मिले एंड 1.52 उसने एक्स्ट्रा बना लिए 2 सालों में। The cost price of a bicycle A is 620. The shopkeeper sells it and makes a profit of $45. Selling price. क्या करें? 145% of 620. तो बेसिकली अगर वो प्रॉफिट बना रहा है तो इट इज मेकिंग समथिंग एक्स्ट्रा। 145 ऑफ 620, Yes, 620 इज is इक्वल it टू सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जब भी आपका 899. हो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे डालते हैं और जो आपकी सेलिंग प्राइस आती है वो इज इक्वल टू के साइन के बाद आती है। हाउ मच डज दैट कम आउट टू बी? 899. 899। 899। Let's quickly confirm the answers. ठीक है जी। In a sale, the price of a bicycle is reduced from 2400 to 1596. That's a huge reduction. Percentage कितनी है reduction की? X percent of 100. X percent of 2400 is equals to 1596. Okay. So why don't we just use the formula for percentage reduction? वो are you familiar with that? I used this. ओके चलो लेट्स कंफर्म। ठीक है, तो आपका आंसर और इसका अपना भी कंफर्म करते हैं। परसेंटेज रिडक्शन का फॉर्मूला रिडक्शन ओवर ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, आप यूज़ कर रहे हो एल्जेब्रा एंड आई एम ट्राइंग टू यूज़ द फॉर्मूला। लेट्स सी व्हाट वी एंड अप विद। रिडक्शन कितनी है? कैलकुलेट की भी है आपने या नहीं की भी? I found the percentage and I subtracted it from 100. ओके ओके चलो ये मेथड भी देख लो। लेट्स सी इफ इट वर्क्स आउट। 804 रिडक्शन है। रिडक्शन किस चीज़ की? इन दो प्राइसेस में जो कमी आई है। ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी? 2400 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 804 डिवाइडेड बाय 2400 इंटू 100। डिड यू गेट द सेम आंसर? Yes. 33.5। ठीक है, आपका मेथड भी कर लेते हैं। बताओ क्या किया आपने? X percent of 2400 is equals to 1596. X percent of 2400 is equal to 1596 and X is equals to 66.5. 66.5%। Yes, 100 Okay. minus 66.5 is equals to 33.5%. Oh, okay. Zabardast, Zabardast, Zabardast. So that's algebra. As a tax on the original price of a bicycle is charged at 20% of the original price. After tax has been added, Matthew pays this much for the bicycle. या इसको पहले समझा पाओगे कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है? The tax of
on the original price is 20% of the original price. So the selling price is 120% of the original price, which is 1080. चलो चलो एक सेकंड होल्ड ऑन. तो सेलिंग प्राइस आप कह रहे हो, सेलिंग प्राइस के अंदर जो टैक्स ऐड हुआ है गवर्नमेंट का, दैट्स 20%. तो 20% ऑन द ओरिजिनल प्राइस. ओरिजिनल प्राइस इज ऑलवेज टेकन एज 100 प्लस 20 बिकॉज कोई चीज़ ऐड हो रही है. 120% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस. X. इसको 1080 नहीं लेना. No. ओके, ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू. 1080. शाबाश शाबाश. तो सेलिंग प्राइस जो है दैट्स 1080. एंड इफ एंड व्हेन वी सॉल्व दैट व्हाट डू वी गेट. 900. तो बेसिकली 100 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ और ये 120 डिवाइड हुआ एंड एक्स कम्स आउट टू बी 900. दोज ऑफ यू लॉस्ट, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. जब भी अगर प्रोडक्ट या चीज़ बनाते हो, मार्केट में बेचते हो, इट्स नॉट लाइक यू जस्ट सिंपली कैलकुलेट योर कॉस्ट एंड देन पुट अ प्रॉफिट ऑन इट एंड यू गुड टू गो. और उसकी आप सेलिंग प्राइस नहीं बना सकते कि जैसे चलो मेरे 100 रुपया खर्चा है, मैं 20 रुपये ऊपर रखता हूँ क्योंकि मैं 20% कमाना है तो 120 की सेल कर दूंगा. गवर्नमेंट ऑलवेज कम्स इन एंड सेज कि जी हमारा टैक्स, सेल्स टैक्स तो दो. तो ये वही कह रहा है कि 20% जो है टैक्स लग जाता है किस पे, जो ओरिजिनल प्राइस है बाइक की. ओरिजिनल प्राइस कितना है वही तो हमें नहीं पता, कैलकुलेट करने का कह रहे हैं. तो वो हमारी एक्स है, वी डू नॉट नो दैट. तो आपने इसलिए जब इक्वेशन बनवाई तो आपने कहा जी 20%, 120 बिकॉज 20% ऐड हो रहा है, 120% ऑफ नहीं तो 20% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, जब आपने वो 20% ऐड कर दिया इसलिए आपको 120% बना दिया, 120 और 100 बना दिया. तो 120% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1080. जब आप वो 20% भी ऐड कर दो तो तब प्राइस 1080 बन जाती है. तो भाई ओरिजिनल प्राइस क्या थी जब अभी गवर्नमेंट का टैक्स ऐड नहीं किया था, तो दैट वाज 900. ठीक है. ओके जी. एडा इन्वेस्ट 600 इन एन अकाउंट दैट अर्न्स सिंपल इंटरेस्ट. At the end of 3 years, the investment is worth $681. Calculate the rate of simple interest per year. What do we do? We'll use simple interest formula, but first we'll find the interest amount minus principal. तो दो फॉर्मूलाज हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. यहाँ पे मैं कौन कौन सी वैल्यूज डाल सकता हूँ? Amount and principal. अमाउंट इज हाउ मच? 681. तो ये वहाँ जाके माइनस हुआ और 81 आपका इंटरेस्ट आया. इंटरेस्ट यहाँ डाल देते हैं. 81 इज इक्वल टू 600 into R into 3 over 100. एंड ये 100 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा. Yes. 100 ओवर 600 भी यहाँ पे आके डिवाइड होगा और ये 3 भी यहाँ आके डिवाइड होगा, वहाँ सिर्फ R रह जाएगा. दैट कम्स आउट टू बी 4.5%. 4.5%. 4.5%. For those of you watching this video and have randomly jumped on to a question, मैंने वीडियो के स्टार्ट में ये बताया था कि ये तमाम वीडियो जो हैं, ये वर्कशीट जो हैं, ये अवेलेबल इन द लिंक बिलो. तो आप ये वर्कशीट पहले डाउनलोड कर लो, पीडीएफ में होगी, उसको प्रिंट करो, सॉल्व करो. एंड इफ़ एंड व्हेन यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस, तब आके ये वीडियो देखें, इसका सोल्यूशन देखें. Dwayne buys a camera for $90. He sells the camera for $126. परसेंटेज प्रॉफिट क्या है? इसका फॉर्मूला आता है 126 over 90 into 100. ओके. 126 ओवर 90 into 100. और वो कितना आता है? 140%. Then we subtract it from 100. We get 40%. 140% आ गया और उसको आपने सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम 100 एंड यू गेट 40%. अच्छा, परसेंटेज प्रॉफिट का, इफ यू वर टू डू द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज प्रॉफिट, डू यू नो व्हाट दैट इज? जिस तरह परसेंटेज रिडक्शन थी ना, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100. हाउ मच इज द प्रॉफिट? 36. 36. How much is the original amount? 90. 90. And if we multiply that with 100, let's see if we get the same answer. We do. ठीक है. तो इन दोनों तरीकों से ये हो सकता है. The price of a computer was $375. In a sale, the price was reduced by 15%. Calculate the reduction in the price of the computer. जी. 85% of 375. Okay.
अब दोज हु आर वीक इन परसेंटेजेस, जब भी आपका फ़ोन फुली चार्ज होता है तो 100% होता है, राइट? और अगर उसकी बैटरी 15% रिड्यूस हो गई है तो आप यू एंडेड अप यूजिंग दिस मच बैटरी, ये तो गई बैटरी। एंड इफ दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय हाउ मच, 15%, तो पीछे बैटरी रह कितनी गई? इट इज़ नॉट गोइंग टू बी 100% एनी मोर, इट्स ओनली गोइंग टू बी 85%. So that is why Hamza, you mentioned 85%, right? 85% Yes, of 375. 375, and that will give us 318.75. 318.75. Then we'll subtract it from 375. ओके ओके, अच्छा इसमें हमने ना बेसिकली एक स्टेप ऐड कर दिया हमजा। आई थिंक इट वुड हैव बीन ईजियर इफ़ वी हैड जस्ट डन, सिंस रिडक्शन मांगी है ना, फाइनल प्राइस नहीं मांगी, रिडक्शन हम वो डायरेक्टली भी कर सकते थे। तो 15% ही रिड्यूस हुई है ना, तो 15% ऑफ Yes. 375 वुड हैव जस्ट गिवन अस द रिडक्शन। ये हम थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा कर बैठे। 15% ऑफ 375 कम्स आउट टू बी हाउ मच? 56.25। आई एम प्रीटी श्योर आपका भी यही आ रहा होगा, Yes, sir. ठीक है? तो हम वो चलो वो अच्छा है, वो कॉन्सेप्ट भी हो गया, बट दिस इज़ क्विकर और एंड मोर डायरेक्ट मेथड। आपका जो मेथड है वो भी आगे काम आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी आगे काम आएगा। अच्छा ये हमने बहुत क्वेश्चन एक्सचेंज वाले स्टार्ट में कर लिए, तो वी कैन लेट्स स्किप दिस फॉर नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। मरियम जो है, शी वर्क्स इन अ शॉप, शी अर्न्स $5.2 पर आवर, शी ऑल्सो अर्न्स अ बोनस। बोनस में ख्याल में एक्स्ट्रा काम करने पे या एक्स्ट्रा, हाँ, शी इज़ अर्निंग इट फॉर सेलिंग एक्स्ट्रा थिंग्स। तो इन 1 वीक शी वर्क्स फॉर 32 आवर्स एंड शी सेल्स आइटम्स विद अ वैल्यू ऑफ 2450 पाउंड्स। कैलकुलेट टोटल अर्निंग्स उसकी कितनी हुई हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ हमसा समझाएं कि क्या She क्या हो wo- रहा है। First we'll multiply 5.2 with 32 because she works for 32 hours and she gets $5.2 तो per hour. इससे हमारा क्या आ जाएगा, अर्निंग आ जाएगी मरियम की। Yes. तो बेसिक अर्निंग लिख लेते हैं। बेसिक अर्निंग इज इक्वल्स टू $5.2 हमें मिलता है, और $32, 32 आवर्स के लिए काम किया, कितना बनता है? $166.4. परफेक्ट, आगे? Then we'll find the bonus she got, which is 15% of 2450. ठीक है, तो जो वो वट एवर शी सेल्स उसका 15% भी उसे मिल जाता है, तो उसने इतने का बेचा है और इसका 15% उसको मिल जाएगा, तो 15% ऑफ 2450 कम्स आउट टू बी 367.5. 367.5। तो ये भी इनकी अर्निंग है और ये भी इनकी अर्निंग है, इनको क्या हम ऐड कर देंगे? Yes, we'll add them both. व्हाट डज इट कम आउट टू बी? 533.9. 533.9। हाउ? बिकॉज वी एडेड बोथ ऑफ दीज टुगेदर। ठीक है जी, इसको क्विकली कंफर्म कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। इन अनदर वीक मरियम वर्क फॉर 28 आवर्स एंड अर्न अ टोटल ऑफ 409.6। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारी टोटल अर्निंग दे दी है जो हमने प्रीवियस पार्ट में फाइंड करनी थी, इसमें वो दे दी है। और आप वो कह रहे हैं कि, और पिछले पार्ट में उन्होंने बताया था कि टोटल मालियत कितनी है जिसकी उन्होंने चीज़ें बेची हैं, जिसके ऊपर उससे कमीशन या बोनस मिल रहा था। इसमें वो कह रहे हैं वो मालियत फाइंड करें कि कितनी रकम की, कितने अमाउंट की वो वैल्यूज़ बेची हैं। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? We'll 5.2 into 28 because she works 28 hours and she gets $5.2 per hour plus 15%, and we don't know the value of the items she sold, so we'll let it be X plus 15% of X is equals to 409.6, which is already शाबाश, given in the question. शाबाश, परफेक्ट। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि ये वो रेट है जो उसे मिलता है, ये वो घंटे हैं जो उन्होंने काम किए। 5.2 कहाँ से आए? प्रीवियस पार्ट में गिवन था। और साथ ही उन्होंने कहा है कि उसको 15% वो भी ऊपर वाले पार्ट में ही गिवन है कि 15% उन्हें एक्स्ट्रा भी मिलता है। किस चीज़ का? ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ आइटम्स दैट ही सेल्स। और ये कौन सी अमाउंट है? ये वही अमाउंट है जो हमने फाइंड करनी है, जो यहाँ मैंशनड है। तो हमने एक्स सपोज कर ली, तो ये आपकी थोड़ी सी एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनी है, बट इफ़ योर अलजेब्रा एंड परसेंटेजेस आर स्ट्रॉन्ग तो इट मेक्स सेंस। तो क्या आंसर्स आते हैं भाई? 5.2 28 क्या होता है? 145.6 ओके, plus plus 4 0.15. 0.15x is equals to 409.6. Now if we were to solve this further, what will it become?
X is equals to $1760. x is equal to, हाँ चलो अब 145.6 is gonna go over there and get subtracted, 1.15 वहाँ जाके डिवाइड होगा, क्या आंसर आता है? $1760. $1760. Let me quickly confirm that as well. Huh, perfect, perfect, well done. We have another question over here which says Jack opens a bank account paying simple interest. He pays in 800 and leaves it in the account for 4 years. 4 साल के एंड पे अकाउंट क्लोज हुआ और $920 मिले हैं. तो परसेंटेज रेट क्या था जो उसको मिला है सिंपल Fir- इंटरेस्ट? First, we'll find the interest ओके, by subtracting principal from amount. Then we'll use simple interest तो formula. बेसिकली आपने सबसे पहले अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, उसको रीअरेंज किया तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट Minus माइनस प्रिंसिपल. principal. अमाउंट कितना है? 920. प्रिंसिपल कितना था? 800. व्हाट इज अर्निंग एक्स्ट्रा? वन. $120. अब Simple interest formula I is equals to PRT over 100. ओके, एंड आई इज 120 is 120. equals to 800 into R into 4 over 100. ठीक है. अब आर हमने इस एज इट इज़ क्यों छोड़ा है? बिकॉज हमने वो रेट निकालना है. फोर हमारा क्या है, टाइम है, वो गिवन है. इफ़ एंड व्हेन वी सॉल्व दिस व्हाट डज इट बिकम? 3.75%. ठीक है, R ये is equals to 3.7. ठीक है, 100 मान जाके मल्टीप्लाई होगा, 800 और 4 जाके डिवाइड होंगे. आर इज इक्वल टू 75%. 3.75%. ये रहा. In 2013, Mary worked for company A. Her salary for the year was 18,750 and 5,625 of her salary was not taxed. What percentage was not taxed? Simple, I think percentage का 5625 formula है. over total into 100. शाबाश. तो जो भी वैल्यू गिवन है उसका आपने परसेंटेज निकालनी हो तो आप उसको टोटल से डिवाइड करते हो. एक्सक्यूज मी. तो 5625 डिवाइडेड बाय 18750 इंटू 100. 100 क्या आता है? 30%. 80%. 30. 30%, ओके, 30%. Yeah. रिमेनिंग जो उसके पैसे बच गए हैं सैलरी के वो टैक्स हुए हैं, उन पे 22% ऑफ दिस अमाउंट वॉज डिडक्टेड फॉर टैक्स. मैरिज टेक होम जो टैक्स के बाद बची है वो 18,750 आफ्टर टैक्स हैज बीन डिडक्टेड. और उसके बाद शी रिसीव दिस इन, फिर इकट्ठा नहीं मिल रहा, 52 इक्वल अमाउंट से मिल रहा है एज वीकली वेज बिकॉज दे 52 वीक्स इन अ ईयर. तो हम आई वुड आस्क यू टू ब्रेक इट डाउन इनटू स्टेप्स and First, explain them as well. जी. first we'll find the amount left after the tax was deducted. हाँ. So tax is deducted on $13,125 and 22% is deducted. So 100 minus 22 is 78. So we'll find 78% of 13,125. हाँ. तो 70. अच्छा, to avoid confusion because some students might be weak in it. So if you introduce a new value 78 तो they might get confused. So let's just continue with 22. 22 over 100 ये टैक्स डिडक्शन है ऑफ, ये टैक्स 13,125 पे लग रहा है ना. Yes, sir. तो दिस कम्स आउट टू बी, ऑल्दो whatever you were saying is completely fine. I just want it to be a little more detailed. 2887.5 आपका भी, आई एम प्रीटी श्योर यही आया होगा. नहीं अभी नहीं आया होगा, अभी आप इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे हम. हाँ, ये तो Yes, टैक्स sir. डिडक्शन किस में से डिडक्ट हुआ है? इसमें से. तो हम इसको लिख सकते हैं ये रिमेनिंग. अब हमारी रिमेनिंग अमाउंट कितनी है? 13,125 माइनस 2887.5. सो 13,125 माइनस 10,237.5. perfect. So now we're back on track again. Up, can you lead from here? Now we'll add the amount which was not taxed, which is 5625, And why are we adding that? because we have to find her take home pay, So total take home pay. total take home पे. तो एक तो ये है 10,237.5 जो टैक्स के बाद बच गई है. एक टैक्स से पहले बची थी वो कितनी थी? 5625. 5625. ये रही 5625 तो प्लस 5625. व्हाट डज दैट कम आउट टू बी? 15862.5. एंड इज दैट आवर फाइनल आंसर? No, she received this pay in 52 equal amounts, so we'll divide it by 52. शाबाश. अब वो कह रहे हैं जी वीकली वेज.
और 52 वीक्स होते हैं इन अ ईयर. वी डिवाइड दिस बाय 52. व्हाट डू वी गेट? 305.04. 4 we can round it off to 305. Okay, let's confirm this. 305. Excellent. In 2012, Mary had worked for company B. When she moved from company B to company A, her salary increased by 25%. और इंक्रीज के बाद जो अमाउंट बन गई थी वो इतनी है. कंपनी ए में जाने के बाद ना इतनी बनी थी. तो ओरिजिनली कंपनी बी में कितनी थी? तो क्या इक्वेशन बनेगी? 125% of X because we don't know the salary in when he was in company B is equals to 18,750. तो 125% ऑफ ओल्ड सैलरी बिकम्स हाउ मच? 18,750. 18,750. तो ओल्ड सैलरी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू $15,000. $15,000. बेसिकली 100 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और 125 डिवाइड होगा. ऑल राइट, गुड स्टफ. क्वेश्चन नंबर 7. लुइस वर्क्स इन एन ऑफिस. फॉर नॉर्मल टाइम $8 पर घंटा मिलता है. फॉर ओवर टाइम ही इज पेड द सेम रेट एज नॉर्मल टाइम प्लस एन एक्स्ट्रा 50%. तो 1 मंथ ही वर्क्स फॉर 140 आवर्स नॉर्मल टाइम और 10 घंटे ओवर टाइम. तो कितना उन्होंने कमा लिया? We'll multiply it by 140 to find his earning for normal time, and then we'll find 150% of it because he gets an extra 50% for overtime, and then we'll multiply that with 10 because he works 10 hours overtime. ओके ओके. सो लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप. उसकी जो नॉर्मल अर्निंग है $8 पर आवर है फॉर 140 आवर्स, ये कितनी है? $1120. दैट्स हिज नॉर्मल अर्निंग. अब वो 50% एक्स्ट्रा की क्या कैलकुलेशन करनी है? We can either find 50% of it and we can add it, or we can find 150% of it. ठीक है, बिकॉज 50% एक्स्ट्रा है ना, तो आप जब भी एक्स्ट्रा हो उसको 100 में ऐड कर सकते हो. 150% ऑफ 8 इज इक्वल टू 12. 12. तो जब ओवर टाइम काम करता है तो उसे $12 मिलता है इंस्टेड ऑफ 8. ही गेट्स $12. अब $12 का क्या करना है? He works 10 hours overtime, so we'll multiply 12 with 10. तो जो ओवर टाइम की अर्निंग है दैट्स $12 इंटू 10 आवर्स, दैट्स 120. अब Now we'll add them both. तो वी We have ऐड to दिस find वैल्यू एज total वेल. earning. परफेक्ट. इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया, व्हाट डू वी गेट? $1240. एंड इज दिस द फाइनल आंसर? Yes, sir. Perfect. Perfect. Sarah invests $240 in an account that pays $3 per year. Simple interest. She leaves the money in the account for 5 years. How much Sarah has at 5 years, end of 5 years? We'll use simple interest formula is equals to PRT over 100. तो आई थिंक इसमें बस Principal 240 डालना है, 3 और 5. तो बस कॉन्सेप्ट बता दो ना. आई एक्सपेक्ट द यूट्यूब व्यूअर्स टू सॉल्व इट देमसेल्व्स. final answer is 276. 276. Okay. Christiane buys a fridge and freezer in a sale. The sale offers 15% off everything, and she pays a total of $357. सेल से पहले उसकी कॉस्ट $250 थी. तो व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द फ्रिज? सेल के बाद कितने की? 85% of 250. First, we'll find the 85% of freezer. ओके The sale price of freezer 85% of 250. ओके. दैट कम्स आउट टू बी 212.5. ऑलराइट. Then we'll subtract it from the total she paid to find the amount she paid for the fridge. तो बेसिकली फ्रिज की कॉस्ट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू द टोटल अमाउंट दैट शी पेड माइनस The amount she paid for the freezer. amount she paid for the freezer, and she ended up paying 212 for the freezer, Yes, sir. and the answer comes out to be 144.5. 144.5. लेट मी वॉक यू थ्रू इट. बेसिकली एक सेल पे सब कुछ, हर चीज़ पे 15% ऑफ मिल रहा है. अब का टोटल बिल जो है $357 है. उसमें दो चीज़ें खरीदी थी, एक फ्रीज़र और एक फ्रिज. फ्रीज़र की कॉस्ट उन्होंने बता दी कि $250 है बिफोर द सेल. तो उस पर भी तो $250 पे 15% ऑफ हुआ. अब जिससा भी आपने को कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा पहले दिया था, 15% ऑफ जब कहता है तो टोटल वैल्यू जो होती है ना, दैट्स 100%.
ये 100% है। अगर 100% में से अगर आपने 15% ऑफ कर दिया तो अगर इतनी वैल्यू यूज़ हो गया तो पीछे क्या रह गया, 100 नहीं रह गया, अब रह गया 85। तो ये वही 85% नज़र आ रहा है, 85/100 ऑफ व्हाट, द फ्रीजर्स कॉस्ट। द फ्रीजर इज़ 250 का बिफोर द सेल, सेल के बाद कितना हो गया 212। अब उसका टोटल बिल बना था 357, तो हमने यही 212 जो है 357 से माइनस किया, तो यकीनन दो ही तो चीज़ें खरीदी थी, एक फ्रिज और एक फ्रीज़र। तो अगर फ्रीज़र की कॉस्ट जो है वो हमारी 212 है, तो फ्रिज की कितनी रह जाएगी 144.5। Here we go. I think we have two more questions to go. Oh, Question number 8 and 9. that question is not complete yet. We have to Really? find the cost price. Yes. What was the cost of the 80. fridge before the sale? अच्छा ये, Yes. this is the cost of the fridge after the sale. Yes. Oh, 85% of the cost price, which we'll take as X, is equals to selling price, which is 144.5. all right, all right. So this is a four box method. I'll tell you what this refers to. Basically आपके पास four boxes होते हैं, and in the first box आपकी percentage की value जाती है, in the box which is in the denominator आपका 100 होता है mostly. What do we have over here? Cost price होती है या market price होती है, या we have the original value, या we have the old value. यहाँ पे we have sale price और amount of discount, या हमारे पास न्यू वैल्यू होती है, ठीक है। दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर। तो जब 85% ये हम कह रहे हैं, 85% ऑफ क्या, ओरिजिनल वैल्यू जो फाइंड करनी थी, उन्होंने कहा ना बिफोर द सेल। तो ये देखो मैंने यहाँ पे भी थर्ड बॉक्स में क्या बताया, थर्ड बॉक्स में क्या आता है, थर्ड बैक बॉक्स में ओरिजिनल वैल्यू या ओल्ड वैल्यू आती है। तो हमें वो कह रहा है कि जी ओरिजिनल बिफोर द सेल, तो हमने कहा जी ठीक है, ये थर्ड बॉक्स है, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू डाल देते हैं, हमें नहीं पता। और आफ्टर द सेल हमें पता है, न्यू वैल्यू जो है या सेल प्राइस जो है वो यहाँ पे आती है फोर्थ बॉक्स में। नेक्स्ट कम्स आउट टू बी हाउ मच, $170. एग्जैक्ट 170। Yes, sir. शाबाश, परफेक्ट। चलें जी, कैलकुलेट द प्रॉफिट। ट्रेडर ने 7 आइटम खरीदे हैं $4.1 ईच, 5 फॉर 6.4, सारे मिला के $10 के बेच दिए हैं, क्या करेंगे? First, we'll find the cost price. टोटल कॉस्ट है how much? 4.1 4.1 4.1 into 7 plus 5 into 6.4, which comes out to be $60.7. okay, Then we'll find the selling price. There are total 12 items, and he sells all of them for $10 each. So 10 into 12. तो let's say the total money that he makes या total revenue, तो he is selling 10, all the items हैं कितने, 12. 12 because there's 7 and 5, so he is making 120। अब प्रॉफिट कितना होगा, Selling price minus cost price. excuse me, 120 minus 60.7 and that comes out to be $59.3. 59.3। अब प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं कही थी, हमें से प्रॉफिट कहा था, तो हमारी ये एग्जैक्ट ही एज इट इज़ हम वैल्यू लिख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट ऑन $450 फॉर 5 years at 4% per annum, आई थिंक इज सिंपल, PRT ओवर 100 वाला फॉर्मूला है। व्हाट डू वी गेट फॉर Yes, दिस, व्हाट इज द आंसर? 90. 90। I'll expect the YouTube viewers to solve it themselves. Fatima and Muhammad buy new bikes. Fatima buys a city bike costing $360. She pays 60% of the cost, then pays $15 per month for 12 months. How much does she end up paying altogether? This question is a typical hire purchase question. What are we going to do? First, we'll find 60% of the cost, which is 360. 60% of 360 because ये तो वो है जो वो डाउन पेमेंट करी। How much does it come out to be? $216. $216. Next. Then we'll multiply 15 with 12 to find the amount she pays in तो the remaining हाँ, तो जो इंस्टॉलमेंट्स दे रही हैं वो कितनी है, दैट्स $15 into 12। How much is that? $180. 180। How much does she We'll pay add them altogether? both. And it comes out to Two be ones $396. 396। Express this amount as a percentage of the original cost। तो ये जो 396, 396 over 360 into 100. शाबाश।
So this cost that she's paying now as a percentage of the original price, that was 360 into 100. ये original कहाँ से आई? ये रही. और जो new amount है, that's from here. And if you multiply that with 100, how much is it? 110%. 110%. Good, good. How many questions do we have more? Just one part of this and one other question. ठीक है जी. Muhammad pays 569.8 for a mountain bike in a sale. The original price has been reduced by 26%. Calculate the original price of the mountain bike. Can you give me an equation for this? 74% of original price, ये which we'll 74 take as कहाँ से आ रहा है X. आपके पास? What's it? How did you get this 74? 100 minus 26 because the price is reduced by 26%. Perfect. Whenever we have reduction, what we can do to solve the question directly is subtract that value from 100. 74% of. To the original price, we'll take that as X. Okay, okay. According to the formulas that rule that we just learned, 4-box rule. आगे. Is equals to 569.8, Okay. which is the selling price. एक्सेलेंट. तो यहाँ पे हमें याद है हमने ओरिजिनल प्राइस या कॉस्ट प्राइस की बात की थी ना, और यहाँ पे हमने बात की थी सेलिंग प्राइस या न्यू वैल्यू की. तो ये वही रूल ही चल रहा है. एंड व्हाट डू वी गेट? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एक्स? $770. $770. And that's the answer. Calculate the original price of the mountain bike. Yes. Okay. Now we're on to the last question, and hopefully we're going to be winding up this video in another 5 minutes. It is given that $100 is equivalent to 56 pounds. Pounds or dollars का conversion given नहीं, we're given the conversion rate, but we have to convert it and show it on a graph or grid. What do we do? We'll plot 2 points, one on 00 and the other on 156. How do you know that you're going to plot 1 point on 00? Because when there will be $0, there will also be 0 pound. Perfect. When we take $0 to get exchange for pounds, we will get 0 pounds for $0. So ये 0 हो गया. दूसरा exchange rate क्या है? $100 for 56 pounds. So what's going to go on the x-axis and what is going to go on the y-axis? 100 will go on the x-axis. Why? Because the dollars are given on the ठीक x-axis. है, शाबाश. तो $100 यहाँ से हमने 100 से ऊपर जाने, और y-axis पे क्या चाहिए? Pounds 56. 56. This is going to be 56. Where do these two meet? Over here, right? And Yes. if we join these 2 points together, we get our graph. So let's try to do that. 0 say we're going to join 100 comma 56, and make sure your pencil is sharp and you join exactly those 2 points right through the mid. This is what it comes out to be. Use your graph to convert $64 to pounds. $64. We'll draw a dotted line on the graph where the dollars are 64 and where it intersects the graph, we'll find the value at y-axis. And according to my graph, it intersects at 38. What's your answer? 36. 36. My answer is slightly out of range, since probably because I'm using a digital graph. So when you draw it, I think the concept is clear. You'll get the exact answer. So I hope it made sense. We're going to be solving the rest of the questions in other parts of the videos. You're going to find this entire series in a playlist. I hope it made sense. If you have any other questions, do throw a comment. I'll be more than willing to solve it for you. Khuda Hafiz and take care.